All right. So we understood that there was a significance of having a PMOS and NMOS, that a PMOS will always pass a strong 1 but weak 0. NMOS will always pass a strong 0 but weak 1. Now tell me one thing. It's a pass. Remember what's the point I made? It's pass. It's a pass transistor. Transistor that allows you to pass current, yes or no? Or voltage. Correct? Now, would you ever want to pass a weak element, whether it's 0 or 1? No, no. Will you ever be able to, do you ever want to ever take the risk of passing a weak 1? क्योंकि वो 4.2 वोल्ट से साला कल जाके 3.9 वोल्ट आके गिर गया, प्रॉब्लम ना. Correct? So, in essence, PMOS passes only strong 1, NMOS passes only strong 0. मतलब जिधर भी मेरे को 1 देने का है तो उधर क्या आना पड़ेगा? PMOS. और जिधर 0 देने का तो उधर क्या आने वाला है? NMOS. So if I say this is my supply or VCC or VDD, whatever you call, and this is my ground. Supply के साइड पे क्या रहेगा? PMOS. और ग्राउंड के साइड पे क्या रहेगा? NMOS. Correct? Yes or no? Because see, supply means what? 1. And I want to always pass a strong 1. तो सप्लाई के साइड पे क्या लगाऊंगा मैं? PMOS. मेरे पास चॉइस है क्या? अगर मैंने NMOS लगाया तो क्या at best what I will get? I will get weak 1. अगर मैंने PMOS के जगह पे NMOS लगाया at best मैं बोल रहा हूं, I will get a weak 1. Do I want a weak 1? Weak 1 is actually my worst case. I don't want a weak 1. Whenever I want what? Strong 1. So you will always put PMOS next to VDD and NMOS same thing for ground, that is 0, NMOS close to ground. You have a question? Okay. Clear? Yes or no? That is why एक logic, अभी now let me draw a circuit. ऐसा some circuit, do not think what it is. Suppose I give 0 here. I give 0 here. Which transistor is on? When I give 0 volts at the gate of both the transistors, which transistor will turn on? PMOS. So let's look at this. Let's look at this NMOS first. Okay? एक सेकंड रुक जा. NMOS का source क्या है? There is source and drain. What is the source of the NMOS here? Again, let's think basic. वापस से मैं 10 बार basic जाने के लिए तैयार हूं. You had a doubt, ना? You didn't understand it, correct? I'll explain. Don't worry. Please do not feel scared to admit that you did not understand. Ego पे नहीं लेने का, ठीक है? What I'm saying is that source is the guy who will supply the majority carriers. Correct? Yes or no? मतलब उधर उसके दुकान से मेजॉरिटी कैरियर निकलेगा. NMOS में मेजॉरिटी कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. सो ग्राउंड विल टेक इलेक्ट्रॉन्स और ग्राउंड विल पुश इलेक्ट्रॉन्स. पुश इलेक्ट्रॉन्स means the terminal connected to ground is what? Source. So this is your source. This is your drain. Similarly, for your PMOS, what is majority carrier? Holes. Will VDD attract holes or will it push holes? Holes are positive in nature. So VDD will push holes. So this is your source. This is your drain. This is your gate. This is your gate. Now I am saying my gate is at 0 volts. My gate is at 0 volts. What is the VGS? What is the VGS of my NMOS? VGS is voltage across my gate and source. What is 0? Threshold for my NMOS is positive, yes or no? Correct? What is my VGS across my PMOS? Minus VDD, na? VG is 0. Source is at VDD. So VGS is minus VDD. Correct? Yes or no? मतलब it is highly negative. मतलब my PMOS will be absolutely turned on. Correct? Yes or no?
मतलब दुकान पूरा चालू है. Understood? At that time this fellow is completely on. Yes. So this current will start to flow right now. Yes or no? Correct? So this potential will start rising to VDD. Yes or no? Understood? Yes or no? Will this VDD be a strong VDD or a weak one? Strong, because your PMOS will always supply strong one. Input 0 hai, output 1 hai. Logically, when I give it 1, this fellow is off, this fellow is on. Again, ask why. Because your gate to source voltage is now equal to VDD, VGS. Whereas here, VGS is VDD minus VDD, which is equal to 0. Understood? Yes or no? Correct? Hence, now the output will start to fall. Output will start to fall. Correct? Yes or no? Because this NMOS will start pulling it to ground, na? बराबर ग्राउंड करंट खाएगा कि करंट देगा? खाएगा. Understood? Yes or no? Yes, last bench. Or 50%. Then you're supposed to tell me 50%. Okay. First, did you understand when I give logic 0, PMOS is on? When I give logic 0, PMOS is on. तो output will come to VDD. बराबर. अब मैंने इनपुट को 0 से 1 कर दिया. PMOS ऑफ हो गया. NMOS क्या हुआ? On. That output will start falling. Why? Because ground is now coming into play. Correct? Yes or no? So this point here will start falling to ground. Yes or no? Understood? That is why logic 1 in terms of voltage, matlab high voltage, logic 0 is 0 volts. In terms of current, logic 1 means you are giving current, and in logic 0 in terms of current, matlab you are taking current. इसको देख के समझ में आ गया ना? क्योंकि इधर VDD करंट दे रहा है, उधर ग्राउंड करंट खींच रहा है. So logic 1 means you are always sourcing current. Logic 0 matlab you are always sinking current. Point understood? Yes or no? Correct? Logic 1 means you are giving current, na? Somebody is giving so that your voltage, लो बेटा तुम्हारा voltage बढ़ना चाहिए. Correct? Yes or no? Logic 0 मतलब भाई तेरे को नीचे गिराने का, तो मैं तेरे से करंट खींचूंगा ना. Remember this, you'll never forget it in life. Logic 0 matlab sinking current, logic 1 matlab you are sourcing current. So what do you mean by logic level, darling? What do you mean by logic level? It's a voltage. Correct? Yes or no? So I want my output voltage to be VDD. matlab PMOS has to be on. लूप नहीं, वो ऑन ही रहेगा तो देते रहेगा वो. द मिनट मैंने PMOS को ऑफ कर दिया. गुड क्वेश्चन, आई विल गेट डाउन टू दैट, रिमाइंड मी. दैट्स कॉल्ड फ्लोटिंग वोल्टेज. आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस. वोल्टेज 1 मतलब सोर्सिंग करंट, वोल्टेज 0 मतलब सॉरी लॉजिक 1 मतलब सोर्सिंग करंट, लॉजिक 0 मतलब सिंकिंग करंट. सपोज यू हैव 2 माइक्रो कंट्रोलर्स. वो बोलता है ना ये 0 दे रहा है, ये वैल्यू 0 दे रहा है, वो 0 दे रहा है मतलब करंट ले रहा है. समझ में आया? हाँ या ना? 1 मतलब करंट दे रहा है, 0 मतलब करंट ले रहा है. Do you know most circuits, your latches and all are actually active low? You know why? Because microcontrollers करंट खींचने में एक्सपर्ट है, करंट देने में एक्सपर्ट नहीं है. This is the first point we explain in summer industrial training, because उसमें पूरा माइक्रोकंट्रोलर पे ही काम करने का है. बट रिमेंबर वन थिंग, सब बाकी का पब्लिक एक्टिव लो क्यों है? क्योंकि जब मैं उसको 0 देगा वो टर्न ऑन होगा ना. तो देने वाला अगर खींचने में अच्छा है, जो दे रहा है वैल्यू, लेकिन 0 मतलब क्या? करंट खींच रहा है. अगर वो खींचने में अच्छा है तो सामने वाले का लॉजिक लेवल 0 होना चाहिए ना. यस और नो? पॉइंट अंडरस्टूड? दैट moral of the story, forget the fact about microcontrollers or whatever it is. Logic 1 matlab you are giving current, logic 0 matlab you are sinking current. This point is understood? That's the question I had asked you ना, कि logic 1 और 0 को करंट के एंगल से समझाओ. ये बहुत फेवरेट इंटरव्यू क्वेश्चन है कोर कंपनी में.
याद रखना, this is one favorite interview question in core companies. Now he asked a question that what if I just shut down my PMOS? Neither my NMOS is on nor my PMOS is on. वैसा कभी पॉसिबल होगा ही नहीं unless मैंने यहां पे कुछ वोल्टेज नहीं दिया. There is 0 volts, 1 volts and then no volts. Please understand one thing. Is 0 volts as good as no volts? No. They are different. They are different. See, there is some current, zero current and no current. No current मतलब there is no movement of electrons. Understood? ये 3 stage होता है. That third stage is called high impedance. नाम सुना है high impedance? है? Buffer, उसको tri-state buffer बोलते हैं. As I told you, be selective about what you say. That could be your last word in industry. Buffer क्या होता है? Buffer तो straight होता है. When it's tri-stated, then it's high impedance. Correct. अच्छा, I am supposed to fill in the blanks, yeah? I'm just joking. Huh. Okay, now. See, understand this. Now suppose मैंने nothing, either it's on or it's not off. It will try to hold the previous state. मतलब अभी suppose 1 है. Suppose initially I give 0, correct? Do you agree on the other side there is some circuit available? ऐसे तो it can't be hanging wire ना. It will go and feed into some other circuit. इतना तो पक्का है ना यार, मतलब ऐसा लटकते वायर पे तो मेजर नहीं कर सकते हो तुम लोग. The path always has to complete. Remember one thing. The path from VDD to ground always has to complete. But now the question is, मैंने इसको on किया तो this node, so can I say this is a capacitance, yes or no? Finally it's going into something else. That something else will be a gate only, correct, yes or no? Gate मतलब क्या हुआ? Capacitance, बराबर? याद है मैंने बोला था ना तुम्हारे पीछे वो सर्किट X है जो तुमको चार्ज कर रहा है, वैसे तुम किसी और को चार्ज करोगे, yes or no? So you have to charge this. Suppose मैंने इसको चार्ज किया VDD तक, चार्ज हो गया, फिर मैंने सडनली ड्रॉप कर दिया, फॉर सम रीजन ये बंद हो गया. So capacitor will hold VDD for some time, but capacitor is also leaky. Leaky मतलब it will finally discharge. Capacitor inherently will also discharge. You know that, right? वो लाइफ टाइम के लिए उसमें होल्ड नहीं करेगा पावर. It will discharge. Did I answer your question? Good question. Understood? Yes or no? So in a lot of low power designs, ये लोग क्या करते हैं? ऑन करके ऑफ कर देते. And you're waiting for capacitor to hold its charge, then suddenly you refresh again. So DRAM, dynamic random access memory, works on that principle. कि capacitor को charge किया, उसके बाद छोड़ दिया, वापस refresh किया, वापस छोड़ दिया. That is DRAM का concept. So this is majorly why we call this as CMOS, because it is complementary. Remember, any CMOS circuit will always give you inverted output. That's why they say NAND, NOR and invert are your universal gates. That is why they are your universal gates, because you have no option but to use them. You understood why ना? ऊपर PMOS लगाना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग 1 देता है. अब उसके वजह से साला ये आता है, क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड ऑपरेशन आता है. इन्वर्टेड के वजह से यू कैन ओनली मेक ऑल इन्वर्टेड आउटपुट्स, इन्वर्टेड लॉजिक, यस और नो. हेंस दे बिकेम यूनिवर्सल गेट्स. अपना क्या प्रॉब्लम है, अपने को थर्ड सेमेस्टर में पहला सिखा देते तो हम लोग बोलते बिकॉज इट इज यूनिवर्सल गेट्स, दैट्स व्हाई वी कैन डू इट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ दिस दे आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स. Understood this? Yes or no? Okay. Now, all right. Now we have understood basics of thoda CMOS, inverters. There are some very absolute basics that we have understood. Okay. We understood concept of strong 0, strong 1, weak 0, weak 1, transistor कैसा चलता है, क्यों होता है, ये होता है, वो होता है, everything. Now,
Let me ask you all one question. Let's assume this is one circuit. Yes or no? A, B, C. Simple. One inverter followed by another inverter. Buffer. Correct. Inverter followed by inverter, output is buffer. Now, let me say, can I draw CG here, which is basically the, rather to be more accurate, 2CG. क्योंकि इसका गेट कैपेसिटेंस आएगा, इसका गेट कैपेसिटेंस आएगा. Yes or no? 2CG. Suppose that same concept I'm coming to play. Let's say this is W is equal to 3, L is equal to 2. मतलब width is 3 units, length is 2 units. Here also W is equal to 3, L is equal to 2. Width is 3 units, 2 units. That's called minimum size transistor, unit size transistor or minimum size transistor. Okay, minimum size बोलते हैं. That's traditional. 3 and 2 के नीचे कभी जाएगा नहीं. उसका रीजन मैं आपको बाद में समझाऊंगा. प्लीज मेक अ नोट. Remind me to explain this on Friday why minimum size is there 3 and 2, because you would have watched the video and then I can explain to you what is what. Okay, all right, but remind me, somebody please remind me. Okay, so now the question is, width is 3 and 2, length is 3 and 2, 3 and 2. Suppose I make this 6 and 4, 6 and 4, double the size. Correct? Ab, when I give 0 here, this 2CG will charge up to VDD, yes or no? Correct? Now I increase this size to 12 and 8, 12 and 8. Now my question to you is, will it take the same amount of time to charge up to VDD, more amount of time or less amount of time? अभी मैंने साइज बढ़ा दिया, वापस इनपुट 0 दिया है, वापस इनपुट स्क्रैच से 0 दिया है, तो वापस 2CG चढ़ेगा, yes or no? Will it take the same amount of time, more amount of time, less amount of time? How many people say less amount of time? How many people say same amount of time? How many people say more amount of time? More amount of time. मैंने मेरा width and length बढ़ाया आगे वाले का, उसके वजह से उसका बाल्टी का साइज बढ़ गया, उसके वजह से पीछे वाले को चार्ज करने को टाइम लगे, ज्यादा लगेगा ना. Understood? Yes or no? Everybody understood? Yes or no? लेकिन प्रॉब्लम ये है, अब तुम्हारा बॉस आके बोलता है नहीं मेरे को सेम अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए. Possible scenario, yes or no? First of all, did you guys understand the problem? Correct? कि आगे वाले का साइज बढ़ा है, उसका बाल्टी का साइज बढ़ गया, मेरे को भरने को टाइम लगने वाला है, yes or no? तो ऑप्शन क्या है? होज का साइज बढ़ाओ जिससे पानी भर रहे हो, होज का साइज बढ़ाओ. तो इधर अपना होज क्या है, कोई बोल सकता है? नहीं, VDD तो VDD है भाई. VDD पानी का सप्लाई है, MTNL का सप्लाई है, MTNL सॉरी अपना म्युनिसिपैलिटी का. करेक्ट? उसको तो नहीं बढ़ा सकते. होज का साइज बढ़ाना पड़ेगा. मतलब क्या, तुम्हारा ट्रांजिस्टर का विड्थ बढ़ाना पड़ेगा. ओनली विड्थ, लेंथ नहीं. लेंथ बढ़ाया तो क्या बढ़ेगा? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस बढ़ गया तो होज वापस से छोटा हो गया, तो क्या बढ़ाने का? विड्थ. सेम फॉर योर NMOS, क्योंकि जो PMOS के साथ करोगे वो, because today's rise is tomorrow's fall. You understood? Remember, rise and fall are to be treated equal. अगर rise time पे improvement डालना है तो same improvement किस पे लाना पड़ेगा? Fall time पे. Is this logic clear? Everybody understood this? No, this is very important, boss. That is one of the first labs that you will do. Is you will take an inverter, उसके आगे और एक inverter लगाओगे, इसका लोड बढ़ाते जाओगे, and you'll see and you'll observe your rise and fall times.
कि VLSI is all about me feeding you, feeding him, na? Yes or no? If you don't take care of this, then why do you say your chips are so fast? It's all about delay. The three parameters, fundamental three parameters as a VLSI engineer you need to know or you need to take care of. Delay, area, most important in today's world, power. DAP, PAD, APD, ADP, जो भी बोलना बोलो. Your project will have a small competition as well, that your area delay product, the person who has the best area delay product मतलब, because देखो तुमको अगर डिले कम करने का तो तुमको एरिया बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट? सो द बेस्ट एरिया डिले प्रोडक्ट, द लोएस्ट एरिया डिले प्रोडक्ट विन्स. My advisor used to do that at USC. I used to be an instructor in that class as well. I'm going to do the same principle here. Best area delay product wins. उसमें बहुत सारा फैक्टर्स आता है, कैसे, हाउ यू डू द लेआउट, ये सब वो सब बहुत कुछ आएगा उसमें. आई विल एक्सप्लेन टू यू. ये पूरा महीना उसी में जाएगा. बट द फाइनल एम इज कमिंग अप विद अ प्रोजेक्ट विद द बेस्ट एरिया डिले प्रोडक्ट. आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज एरिया, व्हाट इज, हाउ डू वी मेजर डिले, ये सब वो सब. डिले कैसा है, इधर जब चढ़ना चालू हुआ उधर गिरना. सो व्हेन दिस क्रॉसेस हाफ पॉइंट, दैट गोज बिलो हाफ पॉइंट. ओके, दैट इज हाउ वील मेजर. ओके, नाउ there is something called as rise time, there is something called as fall time. Okay, rise time is basically from, there are many ways of looking at it, 5% to 95%, the time taken from voltage to go from 5% to 95%. So let's say VDD is 5 volts, so 5% would be 0.25, 95% would be 4.75, or you go from 10% to 90%. Typically we consider 10% to 90%. So from 0.5 volts to 4.5 volts, the amount of time taken, that is called rise time. From 4.5 volts to 0.5 volts, the amount of taken is called as fall time. ये दो मेट्रिक याद रखो, जितना जान ये दो मेट्रिक अभी खाने वाला है और कुछ नहीं खाने वाला है तुम्हारा. Everything is on rise time because everything is delay ना, कितना टाइम लगता है चढ़ने को और कितना टाइम लगता है गिरने को. अंडरस्टूड? यस और नो? ज्यादा टाइम लगेगा बाल्टी में पानी भरने को, मतलब ज्यादा टाइम चढ़ने को लगेगा. यस और नो? सेम थिंग, ज्यादा टाइम खींचने को लगेगा तो ज्यादा टाइम इट विल टेक टू फॉल. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट है बॉस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि तुम्हारा आगे वाला भी तुमको इंपैक्ट करता है, तुम्हारा पीछे वाला भी तुमको इंपैक्ट करता है.